Hello friends, welcome Anil Tech Adda YouTube channel. So in this video, I'm going to tell you how to use custom sum formula. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कस्ट फॉर्मूला लगाया है सम निकालने के लिए, लेकिन जैसे सम करता हूँ तो यहाँ पे जीरो आता है. सो व्हाई इज दिस कमिंग हेयर ज़ीरो. सो हाउ टू यूज़ द कस्टम फॉर्मूला which is the sum formula. So first of all, I will clear this content and डू इट अगेन. तो यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपको एक बार राइट क्लिक करना है सेल में. राइट क्लिक इन दिस सेल एंड गो टू द फॉर्मेट सेल. फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन द टाइप. यू विल से द टाइप हेयर इज जर्नल. यहाँ से आपको जर्नल को हटा देना है. रिमूव जर्नल एंड नाउ प्रेस हैश देन डबल कोट्स स्पेस. I will use KZ format, so use KZ, then press OK. To use formula like this is the custom. Press OK. Now I will make entry here. As you enter 15, this will all cells by dragging or using 24. Now hit formula, so the formula will be applied, and now I will use the sum formula. Press equal, then type sum and bracket, select the difference, press enter. You will find total value of 165 kg. Here 0 is removed. So this is the way to use the custom sum formula. Thanks for watching. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें. धन्यवाद.